Next question is, if secant theta plus tan theta is equal to P, if secant theta plus tan theta is equal to P, then prove that P square minus 1 by P square plus 1 is equal to sin theta. If secant theta plus tan theta is equal to P, then prove that P square minus 1 by P square plus 1 is sin theta. So according to the problem we have, secant theta plus tan theta is equal to P. Secant theta plus tan theta is equal to P, isn't it? So secant theta plus tan theta अगर P होगा तो secant theta minus tan theta would be 1 by P होगा. अगर secant theta plus tan theta का वैल्यू अगर P है, secant theta minus tan theta का वैल्यू 1 by P होगा. कैसे 1 by P होगा? Here I write the reason. Since we have, ये एक फॉर्मूला है, secant square theta minus tan square theta is equal to 1. secant square theta minus tan square theta is equal to 1 एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है. तो यहाँ secant square theta minus tan square theta मतलब secant theta whole square minus tan theta whole square है. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? secant theta whole square minus tan theta whole square is equal to 1. A square minus B square formula. A square minus B square formula is A minus B. A square minus B square is equal to A minus B into A plus B. Secant theta plus tan theta. Isn't it? A square minus B square. A square minus B square is A minus B into A plus B. ये secant theta plus tan theta इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में. Therefore, secant theta minus tan theta is equal to how much? 1 by secant theta plus tan theta. So therefore, secant theta minus tan theta is equal to 1 by secant theta plus tan theta value is given how much? P. So you put it here P. So here you get 1 by P. ये है reason. अगर secant theta plus tan theta का वैल्यू अगर P है, P, this is equation number 1 given, तो secant theta minus tan theta का वैल्यू 1 by P होगा. कैसे 1 by P होगा? पूरा रीजन मैंने लिख दिया है. Isn't it? Secant theta minus tan theta is 1 by secant theta plus tan theta, but secant theta plus tan theta is P, no? I placed it here. So secant theta minus tan theta is equal to 1 by P. This is equation number 2. अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट, योर चॉइस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूंगा 1 minus 2, सो secant theta minus secant theta, दिस इज secant theta minus secant theta, ये दोनों कैंसिल. tan theta plus tan theta plus tan theta is 2 tan theta is equal to P minus 1 by P. So what did I get here? 2 tan theta is equal to, here P means P by 1. 1 और P का LCM क्या होगा? 1 और P का LCM P है, 1 और P का LCM P है. P into P square minus 1 into 1 is 1. So this is P square minus 1 into 1 is 1.
ये 2 को भी उधर ले जाओ, 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, व्हाट आई गेट हियर, tan थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी है ना, ये 2 भी इधर आ जाएगा, तो आई गेट हियर पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2p। सो tan थीटा का वैल्यू मुझे आ गया, लेकिन मुझे tan थीटा नहीं, sin थीटा का वैल्यू ये है करके प्रूव करना है। एक काम करो, टेक ए राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस, से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये 90 डिग्री से, say this angle is theta, 90 का ऑपोजिट, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये थीटा का ऑपोजिट है, दिस इज ऑपोजिट टू थीटा, this is adjacent, opposite adjacent. So tan theta is equal to what did we what we have here, tan theta is equal to p square minus 1 by 2p है, so लेकिन definition के accordingly, but tan theta is equal to, what is the definition of tan theta, opposite sided by adjacent side. So tan theta is equal to p square minus 1 by 2p is known to us, tan theta is equal to opposite by adjacent, so opposite must be equal to this p square minus 1, so theta का opposite ये है, this is p square minus 1, theta का opposite है p square minus 1, theta का adjacent 2p, this is opposite, this is adjacent. अभी मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, so in triangle ABC, that is AC square is equal to, AC square is equal to AB square plus BC square, AC square is equal to AB square plus BC square, this is by Pythagoras theorem, isn't it? AC value we don't know, so AC square is equal to AB value is how much, p square minus 1, put it here, so here p square minus 1 whole square, AB का value p square minus 1 है, so p square minus 1 whole square plus BC is 2p, put it here 2p, so 2p whole square, so AC square is equal to, इसको expand कर दो, a minus b whole square formula, a square a minus b whole square, a square मतलब p square का whole square minus 2 into p square into 1 2ab plus b square, a square minus 2ab plus b square plus 2p का whole square, 2p का 2 का square क्या होगा, 2 square is 4, this is p square, so that is AC square is equal to p square whole square, p square whole square is p power 4, p square whole square is p power 4, am I right, minus 2 into 1, 2 into 1 is 2, 2 into 1 is 2, 2 into p square is 2p square, so this is p square का whole square p power 4 minus 2 into 1 is 2, 2p square plus 1 square is 1 plus 4p square. So this is AC square is equal to p power 4, यहाँ देखो minus 2p square है, minus 2p square है, यहाँ plus 4p square है, minus 2p square plus 4p square क्या होगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो plus 2p square आएगा, यहाँ माइनस 2p स्क्वायर है प्लस 4p स्क्वायर है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप बड़े ध्यान से अगर आप देखोगे p पावर 4 को मैं लिख सकता हूं p स्क्वायर होल स्क्वायर, p पावर 4 को मैं लिख सकता हूं p स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर है ना, मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू p स्क्वायर इंटू 1, 2p स्क्वायर को कैसा लिख सकता हूं मैं, प्लस को प्लस मैंने लिखा है, 2p स्क्वायर इज 2 इंटू p स्क्वायर इंटू 1 प्लस इस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर, सो दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये कैसा है बड़े ध्यान से अगर आप देखोगे इस p स्क्वायर को ये की तरह ट्रीट करोगे, ये इफ यू आर ट्रीटिंग दिस होल p स्क्वायर इज ये, देन दिस आल्सो ये, isn't it? If you treat this 1 is b, then this also b. If you treat p square is ये, this p square is ये,
then this is also a. If you treat this one is b, then this is also b. So a square plus 2ab plus b square. A square plus 2ab plus b square. क्या होगा? A square plus 2ab plus b square is a means p square plus b means 1 whole square. So ac square is equal to p square plus 1 whole square. No, तो यहाँ पे भी squares cancel कर दो, मतलब root ले रहे हो. Taking square root here and here, square and root gets cancelled. AC is equal to, here also this square and root gets cancelled. I get p square plus 1. So here, AC value is p square plus 1. So अभी सभी साइड्स पता चल गए हैं. अब कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा. साइन थीटा पूछा है. Therefore, sin theta is equal to, what is the definition? Opposite by hypotenuse. What is opposite? Opposite is this, p square minus 1. P square minus 1 by hypotenuse is p square plus 1. So therefore, sin theta is equal to p square minus 1 by p square plus 1. यही हमें प्रूव करना. sin theta is equal to p square minus 1 by p square plus 1. Okay.